Good evening and greeting to all. Honorable Chief Guest, Dr. Ved Prakash Mishra. Guest of Honor, past District Governor, Dr. Satish Sure. President, Rotarian Samir Sohoni. Secretary, Rotarian Prasanna Dani. Incoming President, Rotarian Dr. Uday Gupte. And incoming Secretary, Rotarian Deepak Sonawane. Respected Rotarians, Rotarians, invitees, members of press and media. I'm Rinmay, along with my co-host Amit. Welcome you all to the installation of Team 23-24 of Rotary Club of Nagpur South. Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. It is indeed a lovely evening, Mrunmai, with mixed emotions where one team hands over baton to another to lead the club for the next year with a new zeal and spirits, taking RCNS to its 52nd year. Light symbolizes brightness, prosperity, and kindles the spirit of positivity. With this, I request our honorable dignitaries to please light the traditional lamp. I request President Rotarian Samir Sohoni sir to assure the dignitaries on stage. Very good evening. Chief guest of today's function, Dr. Ved Prakash Mishra. Guest of honor, past District Governor, Dr. Satish Sure. Assistant Governor, Rotarian Ashok Chandak. Sitting on the dais, the incoming President, Dr. Uday Gupte, Mrs. Gupte, Mrs. Sohoni, Secretary Prasanna Dani, incoming Secretary Deepak Sonawane, President and Secretaries of various clubs of Rotary Club in Nagpur, the team of doctors who is a lifeline of Medghat Surgical Project, esteemed guests,
fellow Rotarians, and Ants, I welcome you all to this today's installation ceremony. Dr. Uday Gupte and his team is taking the charge of this club in this evening. As per the tradition of RCNS, that is our club, the outgoing president has to deliver his address in very brief and short. And I, being a lawyer, I will follow that rule. Rotary year 2022-23 of Rotary Club of Nagpur South was full of activities, events, meetings, fellowship and enjoyment. I tried to reach every member and made all the efforts to get the members involved in one activity or the other. My focus was on transparency in the work and gaining trust of every member. I took all the decisions, of course, with the help of my team, with sincerity and honesty, and the decisions, I feel and I hope, were fair, balanced and unbiased. I am very happy that throughout the year I got the support of senior and junior members of our club. Everyone has played his role perfectly. I concentrated on developing a leadership in some junior members of the club, which I hope will make a difference in the coming years. Number of activities were started in this year, and I am again happy that the ladies wing formed the Inner Wheel Club of Nagpur South, which got its charter also. Throughout the year, my wife Yashodhara, my son Sukrut, my daughter Nandini and my mother extended full support to me. Honorary Secretary Prasanna was an immense help to me. I thank each and every member of our club, including our club attendants Manoj and Mukunda. At the end, I can say that I have full satisfaction and no regrets. I wish the incoming President Dr. Uday Gupte and his team all the best and successful year ahead. I will extend all the help and support he needs. Long live RCNS. Thank you very much. Thank you very much, sir. It is indeed our pleasure to have amongst us Dr. Ved Prakash Mishra as our chief guest. I request our president, Rotarian Samir Sohoni sir, to accord a floral welcome to him as a token of our love and gratitude. A person par excellence, past District Governor Dr. Satish Sure, is with us today as our honorable guest of honor. I request our president, Rotarian Samir Sohoni sir, to accord a floral welcome to him. I request Secretary Prasanna Dani to accord a floral welcome to our own AG, Rotarian Ashok Chandak sir. Thank you very much. We have amongst us sitting in the audience various invitees. We would like to welcome them. Narayan Samarth from Deaf and Dumb School, we welcome you, sir. Vilas Manekar, Pradeep Munshi, Mr. Vikas Limay from Saptak. Namita Sharma, Dragini Shahu from Rotary Club Nagpur. Dr. Shivani Sure from Rotary Club Nagpur Vision. Pankaj Gadkari,
from Rotary Club Nagpur West. We have with us Mrs. Kamla Kaswa. We welcome you, ma'am. Dr. R.B. Deshmukh, Dr. Kiran Kulkarni, past President, Rotary Club Nagpur West. From Rotary Club Nagpur Fort, we have President Jayant Warankar and Pramod Misar. Sonal Thakkar from Rotary Club Nagpur Mihan. Hemant Kerikar and Advocate Jayant Mukadam. We welcome all of them on behalf of Rotary Club of Nagpur South. Collective work is key to success. I would now call upon Secretary Prasanna Dani to deliver the secretarial report for the year 22-23. Thank you. Good evening, everyone. This evening gives me an opportunity to present to you a brief of the activities done by the directors and the respective teams. Fine. The moment the technology takes over, we'll again start. We started our journey on the 3rd of July last year, along with the members as well as a lot of friends. That was our installation ceremony. That was the first event that we conducted, and we declared a number of events on that day. To start with, from the month of July, we had 4 Friday meetings. The meeting, there was a talk on Agnipath intake policy. Second meeting was on pottery painting workshop for ants. Then there was a third workshop which was about designing the Rakhi in a minute. Then this year we started a discussion topic known as Tanta, where we throw one topic to the audience, and the audience comes forward and takes over and talks about the topic in pro or con ways. So this project was taken over by Dr. Sudhanshu Kothe, and this was conducted on the 4th Friday of July. Then activities part, we held a drawing competition at Prahar Samaj Jagruti Sanstha. Then we had an installation of Interact Club of Sharda Mahila Vidyalaya Nandanwan. In the month of August, we conducted a session by PDG Shabir Shakir sir, what not to do in Rotary. Then we had a close meeting where the minutes of the first BOD were read out. And on the 3rd Friday, we had a family meeting where we all had fun together. Another session of Tanta was conducted. The topic was higher education should be an eligibility criteria for the parliamentarians. As far as the events are concerned, we had Rakhi making for Jawans that was conducted at our own clubhouse. Then Rakhis to the Jawans were sent to on the borders on that day through our past president late Ravindra Gandhe sir. Notebook distribution was done at Mukbadir Nivasi Shala at Sauner. Then Ganpati idol making competition was conducted at Prahar Samaj Jagruti Sanstha. Then we had a few participation in district members orientation seminar, and tree plantation was done at government Pridarshini hostel. On 15th August, we had a national anthem singing at 3 prominent squares in the city, namely Lakshmi Bhavan Square, Lakshmi Nagar Square and Diksha Bhumi Square, where the traffic was halted for 2 minutes and a national anthem was sung in everyone's presence. The surplus amount that was collected from Rakhi project was donated to Deen Dayal Pustak Pedi. In the month of September, we had a first week holiday because of the Ganesh Sthapna. In the close meeting, in the second week, we read out the BOD minutes. The few members who have attended the orientation seminar conducted by the district conducted a session on their own, and the title was Rotary from My Vision. Then on the 4th of Friday, we had a session on Is Gita a Gospel that was conducted by our own member, Rotarian Ramesh Khator sir.
Then in the month of September, the activities were we collected Nirmalya from the Sonegao Lake. It was a good event and everyone enjoyed it. Then we attended the district vocational service and membership seminar in this month. In the month of October, we had directors orientation on the first week of Friday. Then we had a club assembly in the presence of our AG CA Parag Paranjpe. We conducted a beautiful program Diwali Pahat in the month of October, wherein morning 7 o'clock everyone was present at the hall and we enjoyed the music in a very good way. In the month of October, we celebrate our charter month, as well as the OCV was conducted on this day, and this blood donation program was publicized in the district district bulletin. This was something which we could do. We keep on reading the 4-way test, but while coming into implementation, we revived the board which is outside our Hadas High School. So this was a makeover thing. And in the month of October, we had activities like Diwali Farar project. This was the best project that was awarded in this year, because 500 packets of Diwali Farar were sent to the border. That was an emotionally, and the project was conducted by our own past president, late Ravindra Gandhe sir. Then on the same day when OCV was being conducted, he was felicitated at the hands of our district governor. And on the same day, we unveiled our club directory. November month, we had Tanta in the first week. Electric vehicles are more harmful to the environment was the topic. Then on the second week, we had World Diabetes Week, which we conducted a technical session by Dr. Shamik Mokadam, as well as Dr. Ajay Kaduskar of our own clubs. Then another member from our club who attended the orientation program explained us Rotary from my vision. The fourth project, which was one of the unique projects coined by our own president Samir sir, 45 students from Anandvan School, Varora, were brought down to Nagpur, had a picnic in Maharajbagh Zoo, and then were taken for a metro ride, as you can see there. Not only the kids enjoyed, even the members who joined and their kids also enjoyed with them. You can see 2 greeting cards were sent by the students to our president for a unique project. Then in the month of December, we conducted a workshop on Shankhnath that was conducted by Vandita Patel. Tanta was conducted again. The clothes define the person was the topic. Then we celebrated our 51st charter night in the 3rd week of December. Sorry. Another session on Rotary from my vision was conducted. Then in the month of December, we distributed school bags to needy students at Sharda Mahila Vidyalaya, Nandanvan. Students from government school in Selu were educated about sex education and adult education. We conducted a session by inviting a person who is himself a starter in bicycle riding. Mayur Gaidhane was the speaker on that day. He explained his journey from Calcutta to Kanyakumari. Then in the second week, we had a close meeting where the BOD minutes were passed, which was conducted in the last month. Then we had a session on happy relationships by BK Didi from Brahma Kumaris. On the 4th Friday, we had a scientific dialogue on astrology by Rajasi Razurkar. On the very first day of the year, that was on the 1st of January, there was a small event conducted, and which meant out to be a very big one, because almost all the members were present for a trip to the Swaminarayan Mandir, and morning hours, that was 7 AM in the morning. Then as every year goes by, we conduct our flagship project, that is the Meghat surgical camp, that was conducted from 17th to 27th January this year.
This was conducted after a gap of 2 years, and this is the 30th year that we had this camp, surgical camp. Samvidhan Dindi in association with Dr. Babasaheb Ambedkar Law College was conducted on 26th of January. Women's Cricket League was a unique idea which we brought up in our club, and that was utilized by all the ants, and they enjoyed the evening thoroughly. I hope so. Then again on the third week we had a close meeting that was followed by the passing of the BOD minutes, and on the final day we had another Tanta session. I want to hand over my kitchen to my husband was a topic. So we really had a good participation in the session. We conducted Yerla I Camp, and on this day we also had our family picnic. All the families were together at the camp, and the ants also helped in the camp. So this was in the month of February, and we attended district seminar on public images and community services also. In the month of March, we celebrated Women's Day. We felicitated our own member, Nilima Bhavne madam, who herself is a social worker and the president of the Dharampet Mahila Multi-State Cooperative Bank. Then we had a close meeting where we passed the BOD minutes conducted in the last month. We invited a speaker from outside, Dr. Prabhash Sahu, who came from who was associate professor. He talked about the rock art of Gavilgarh forts. We have our district representative now in the district, in past President Milind Pathak sir as assistant governor in the year 2023-24 in the team of Asha Venugopal madam. We congratulate you, sir. A personality development talk was organized for the students of Hadas High School by Rotarian Ravindra Aher sir under the leadership of Dr. Vandana Khedikar. Then in the month of March, adolescent education program for girls and boys in the Hadas High School was conducted. Then installation of CPN Berar School, Ravinagar was organized. In the month of April, we again conducted a session on Tanta. I want to hand over my kitchen to my husband. That was conducted one more time on heavy demands. We had a close meeting and the minutes of the last board meetings were passed again. We started another session where members will introduce their businesses to the members. So that was the first session that we conducted, where Deepak Sonane sir and Prasanjit Rajurkar introduced themselves and their businesses. The April month was very joyous because we felicitated the Meghat team who had tirelessly worked for the success of the club, majorly the doctors. So we felicitated the Meghat team of doctors by the club. We met with the RI president, Gordon McNally. So the person who is going to lead the whole year was here in Nagpur, and we celebrated and we enjoyed with him. Again, another session by my business intro was conducted. Yoga can help fight health complications was conducted, and our own member Purushottam Gaidhane delivered the lecture. There was a light and sound show conducted at BAPS Shri Swaminarayan Mandir. This was another project which was conducted by the club for members as well as the non-members. So we could find that more non-members were willing to come to the place, and they enjoyed the dinner at that place. In the month of June, in the month of May, actually, we lost our stalwart and great person, Engineer Ravindra Gandhe sir. So we had a condolence meeting at this place in association with two more institutions. Then we were invited by the enclave, Nagpur enclave of Rotary clubs, for meeting two people who were on their solo flight for ending the polio. So they were in Nagpur and they were felicitated at Nagpur. So we were invited there. Then we had the most awaited president and secretary dinner. That was not happening since last 3 years, but we combined together and we conducted this event, and we distributed the awards here for the annual जो भी काम करते हैं सब लोग उनके लिए.
Then on the last week of June, that was the last week, Rohit Kothari, heart yoga expert and meditation practitioner and trainer, was there at our club, and he got us more information about heart yoga that he told us. So this was for the month of June, and towards the end we had a big celebration of 30 years of Meghat camp, which was attended by none other than Nitin Gadkari ji, as well as Arun Lakhani ji of Mankar Trust. All the team was there and we enjoyed a lot, and we actually आपने देखा होगा Meghat forever was the slogan. So we could understand what happens and what goes behind the scene, and Kapre sir explained it very well. He had a brief talk about the session and discussed about what happens at the Meghat. So this was a brief. This is a brief summary that you can go through, which we did it for our members, and rest. So it's time to felicitate those who have made this possible. There are people who worked hard and kept on working harder till the last day of the Rotary year. Come what may, were with the club, with the Rotary, and renounced working for any individual, thanks to all the BOD members. The annual awards for the club were announced at the President and Secretary dinner hosted by 3 years Presidents and Secretaries. The awards were, just for your information, past President late Ravindra Gandhe sir for being the best project leader, past President Sanjay Tatwawadi sir for his tireless contribution to the club, sir. Thank you very much. Amol Sakharade for being the best director, Vandana Khedikar madam for being the best director. For main awards that were to be presented today by our President Advocate Samir Sohani sir, I request him to come forward and give the award for best couple to Rotarian Prasanjit and Rajasi Razurkar. A big round of applause for this couple. Thank you. Thank you Prasanjit, thank you Rajasi. Now the best Rotarian award goes to Rotarian Purushottam Gaidane. आप कोई भी काम बता दीजिए, कितने भी बजे काम बता दीजिए, सर हाजिर है, एंड ही इज़ रेडी टू टेक एनी सेशन, एनी टॉक, एनी टाइम. Thank you, Purushottam. At this moment, I would like to thank Shri Arun Joshi sir of Hadas High School, who provided us with full support throughout the year, and we would be expecting the same throughout the year ahead, sir. Thank you very much. That's all from my side. We would like to acknowledge the presence of PDG Dr. Praful Mukaddam sir, past President Rotarian Mrunal Mukaddam madam, Dr. Sunanda Sure madam, Uday Patankar from Saptak, Dr. Rajesh Ballar from Rotary Club Nagpur Horizon, Rotarian Rajiv Varbe, Rotarian Gajanan Ranade. We welcome you all on behalf of RCNS. Every term comes to an end, but a new term with a new team takes up the responsibility of walking the club to higher skies of success. With this, I would now like to call upon past President Sanjay Tatwadi to introduce our incoming President, Dr. Uday Gupte. नमस्कार, मैं संजय तत्वादी आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज की शाम में. मंच पर आसीन सभी माननीय सदस्यगण, सामने बैठे हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हुए जितने आज लोग यहां आए हैं,
उनका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे कैसे हर साल बदलते जाता है, विचार बदलते हैं और साथ साथ में थीम भी बदलती है। रोटरी उसी लिए फेमस है, राइट फ्रॉम द इंटरनेशनल टू द डिस्ट्रिक्ट एंड टू द क्लब, theme gets changed, so there is always a rejuvenated energy and the people are there to work for it. इस साल की थीम संगीत, you can see let's bring music to the Rotary world. संगीत एक ऐसा सुगतम आपका एक माध्यम है जो जीवन में जो आदमी उसमें डूब जाए फिर उसमें किसी और में डूबने की उसकी आवश्यकता नहीं। जब संगीत में आदमी डूबता है तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है, विचार खत्म हो जाते हैं, एंड देन मॉडेस्टी एंड हम्बलनेस कम्स, एंड दैट इज व्हाट आवर डॉक्टर उदय गुप्ते इज पर्सोनिफाइड। He has been working with CGSS for 30 years. He has been with the National Civil Defense Services as a Deputy Director. He was President for Association of Medical Sciences. And of course, जहाँ हम संगीत की बात कर रहे थे तो 7 सुरों के साथ में, सरगम के साथ में सबको लेके चलना और 7 आयाम, लोग कहते हैं कि किसी का परिचय क्यों होना चाहिए। कभी कभी शायद वो शख्स अपने खुद की जो खूबियाँ रहती हैं भूलने लगता है, इसलिए उसका परिचय करा देना आवश्यक। ऐसे हमारे डॉक्टर उदय गुप्ते, ही इज़ ए ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। ही इज़ ए फाउंडर मेंबर ऑफ सप्तक एज वेल एज सेक्रेटरी। डॉक्टर मिसेस स्मिता गुप्ते, शी इज़ ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और इनके सुपुत्र सोपान और इनकी बहू अपूर्वा दोनों नेत्र चिकित्सक हैं, रेटिना और कॉर्निया में काम करते हैं। इनकी सुपुत्री मुग्धा, शी इज़ एन इंजीनियर एंड वर्किंग इन द IT फील्ड। उम्र समझती है कि ज़िंदगी की शाम हो चली है, मगर दिल कहता है महफिल तो शाम से शुरू होती है। आई वेलकम डॉक्टर उदय गुप्ते एंड प्रेजेंट यू टू हिम एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब। थैंक यू सो मच। The moment has arrived now to pass on the baton to the new president. I now request President Rotarian Samir Sohni to install Rotarian Uday Gupte as president of the club for the year 23-24. I now request President Uday Gupte to install past President Samir Sohni as immediate past President. I now request Secretary Prasanna Dani to install Rotarian Deepak Sonone as the club secretary for the year 23-24.
congratulations President Rotarian Uday Gupte and Secretary Deepak Sonawani. It's time to introduce the entire team for the year 23-24 to this August gathering. I request all the directors to stay on stage after receiving the pin for a group photograph. President-elect Dr. Ravi Ahir. Can we have Ravi Ahir sir here on stage, please? Dr. Ravi Ahir, PhD and BTech from IIT Dhanbad. Request Dr. Uday Gupte sir to install Rotarian Dr. Ravi Ahir as President-elect. Request Dr. Uday Gupte sir to install Prasanna Dani as Vice President. Prasanna Dani, Wealth Manager by profession. Rotarian Amol Sakharwade as Honorable Treasurer. Amol is into garments and uniform manufacturing. Rotarian Nilima Bhavne Madam as Joint Secretary. Madam is a very well-known personality in Nagpur, President of Dharampet Multi-State Cooperative Bank. Past President Rotarian Dr. Vivek Deshpande sir to be installed as Sergeant at Arms, a renowned gynecologist and past President of Rotary Club of Nagpur South. We request all the board members to please be on stage. Rotarian Advocate Amit Kukde to be installed as Sergeant at Arms 2, a very well-known lawyer practicing on the civil and the criminal side. Advocate Sandeep Marathe as Club Director Administration. Sir too is a very well-known lawyer practicing on constitutional law and service side. Rotarian Dr. Vandana Khedikar Madam as Director Service Projects. Madam is PhD Fine Arts and also the Charter President of Inner Wheel Club of Nagpur South. Rotarian Dr. Mukund Oak as Director Service Project Medical, renowned ophthalmologist. Rotarian Ramesh Thakur as Director Public Relations. Sir is a retired banker. Rotarian Prasanjit Razurkar as Director New Generation. Very well known businessman. Rotarian Shamakant Limay, Director TRF, a very well-known educationalist. Rotarian Dilip Masse to be installed as Director RCC. Rotarian Purushottam Gai Dhane to be installed as Director Vocational Services. By profession, sir is an executive engineer. Rotarian Satish Deure as Director Environment. By profession, a consultant anesthetist. Rotarian past President Satish Raipure, Director Merghat Administration. Sir is a structural engineer. Rotarian Dr. Abhishek Vaidya to be the Director for Merghat Project.
He is Senior Head Neck Oncology Surgeon, National Cancer Institute. Request all Board of Directors to stand abreast for a group photograph. This is one happy moment where one team gives the baton to another and the team to carry out the year. We have with us Rotarian Dilip Masse to be installed as Director RCC. Masse sir, can we have you on stage please? Presenting to you the Board of Directors, Team 2324 RCNS. I now call upon President 2024 Uday Gupte sir to deliver his acceptance speech. Today's chief guest, Dr. Ved Prakash Mishra. Guest of honor, Dr. Satish Sue. Assistant Governor, Mr. Ashok Chandak. My friend, colleague, Advocate Samir Sohani. Mrs. Yashodhara. Then Secretary Prasanna Dani, my wife Dr. Smita, PDG Mukadam sir, PDG Vishwas Sahasrabani, presidents and secretary from different clubs, past presidents and dear friends. First of all, I thank Dr. Ved Prakash Mishra for accepting my request to be the chief guest. He always honors my request. I have invited him number of times for the conferences in National Civil Defence College as a chief guest. I am really fortunate to have a friend like Dr. Ved Prakash. Our association is from last 50 years. Apart from authority in education field and medical education field, he is a wonderful orator. Although this is acceptance speech, but I am tempted to talk on Dr. Ved Prakash also. But believe me, he is a wonderful orator. I have heard him numerous times, and he can talk on varied subjects from medical education, Ramayana, Mahabharata, and Bharatnatyam also. Let me tell you, one day I attended a Bharatnatyam program, and I saw Dr. Ved Prakash as a chief guest. I was really shocked to see him. I was curious what he is going to speak. But he spoke so well that he got more clappings than Bharatnatyam performances. Another thing I would like to tell. यार अमित 3 मिनटं मला कमी होतील थोडे जास्त मिनटं जास्ती सर सॉरी टू से बट anyway, but I have heard him at Narsinghpur speaking on Ramayana, wars in Ramayana, before 10,000 audience crowd, and there was pin drop silence for about 3 hours, and after that audience refused to stop clapping. It was such a wonderful oration. Anyway,
but I thank him for being here. I thank Dr. Satish Way, I call him Satish Mama. From the day one when I got admitted to Government Medical College, he has been my advisor, guide, and he continues to be that. I thank him also. I thank Mr. Ashok Chandak, AG, for being with us. I have got enough social background. In 1980, we started Saptak. We never thought that it will be such a big affair. But next year, I was appointed as secretary, and I continue to be a secretary. In 2001, I got introduced to Academy of Medical Sciences. It is an organization of 2,500 specialized specialists. And after performing the responsibilities in various posts, I thought I will take a break and I will not enter again in the executive committee. But fate thought otherwise, and I became secretary and president in 2010 and 11. In 2016, I attended Meghat camp of this Rotary South, and I was really impressed the way medical persons, medical surgeons, and non-medical people also, members also, who were actually distinguished or stalwarts in their respective fields, but they were working so selflessly, maintaining the register, maintaining the patients and all. So I was really impressed, and then I joined this Rotary South. But I never aspired to be a president. Rather, I thought I will never be a president of this organization because it is a big task, and I have got enough responsibilities and other organizations also. But again, destiny didn't agree with me, and today I am accepting the post of president. So, with all humility, humbleness, and sincerity, I accept this post of presidentship, and I thank you all for showing the trust in me, and I will definitely try my level best to maintain the high standards which have been set by previous past presidents who were again distinguished people in their respective fields. I am aware I am taking this leadership in somewhat difficult conditions. I have got some challenges before me: funds, finances, then membership. But with your cooperation, with the cooperation of past presidents, my colleagues, members, my executive committee members, board of director, I am confident I will be able to overcome those challenges and will deliver a successful tenure. I have got some plans. Because of my music background, I have got some plans regarding music also. Music will be the integral part of my journey and this presidentship. I intend to conduct some workshop on music. Fortunately, Sachin Domne and Surbhi Domne, they are joining as new members. Then regarding health, I will give a special attention to health of my colleagues, members, and conduct the camps for that health issues of the members and their families. And I got other plans also. So regarding first project, we are getting associated with Abhyuday Global Village Vidyalaya. And can you show some slides of that? Okay, no problem. But I invite Sachin Deshpande and Bhagyashree Deshpande to the dais. It is a dedicated couple,
and in one of the programs of Saptak, in program Vegaya Vata, we had invited them, and everybody was really impressed. They're from engineering background, IT background, and they have left their services and started school having novel ideas. There they teach academics as well as modern agriculture also. I will request Dr. Smita to felicitate them with floral buds. For the school, we are donating one printer and stationery worth 30,000 to the school, and we will have association in future also. We are going to conduct health camps of their teachers. They are 30 in numbers, and health camp for the students also. They are more than 300. Another project we are going to take for Savner Mukbadir Vidyalaya. I invite Mr. Nana Samartha to the dais. Through Rotary South, I'll request Deepak to felicitate with floral. We are going to give the Mukhabadir Vidyalaya washing machine. It is sponsored by Mrs. Minatai Jakhade, and we are also giving the notebooks for the student will be sponsored by Sonali Pathak. So friends, I need your cooperation, blessings. Thank you. Time to introduce new members to this August gathering. I request President Dr. Uday Gupte sir to induct new members today. The good news is that we are inducting around 9 members today. I will not call out their names. I request them to come forward and accept their kit. Dr. Sanjay Ugemuge and Dr. Sarita Ugemuge. Can we have them here on stage, please? I guess they are not there. Dr. Ravi Nikhade and Dr. Anupama Nikhade. Dr. Nivedita Kher and Anupam Kher. Dr. Sanjog Singh. C.A. Chinmay Joshi and Swapnaja Joshi. Sudhir Darodkar and Kirti Darodkar. Musical personality of Nagpur, Sachin Dhomne, and his musical better half, Surabhi Dhomne. Can we have you on stage, please? Dr. Sopan Gupte and Dr. Apurva Gupte. Thank you so much, President sir, thank you. I request all the dignitaries on the stage to unveil our club bulletin, the monthly magazine of our club, Southern Lights, and the club directory. We would like to acknowledge the presence of Dr. Samir Deshmukh, Rotarian Piyush Fatehpuria, District Secretary Projects, Rotarian Deven Mate, Secretary Rotary Club Nagpur West,
Rotarian Virendra Patrikar, District Secretary, Service Project. We welcome you on behalf of RCNS. It is indeed our pleasure to have amongst us Assistant Governor Rotarian Ashok Chandakji. Assistant Governor Ashok Chandakji is a developer and builder by profession. Ashokji joined Rotary in the year 2004. He is member of Rotary Club of Nagpur Green City and was president for the year 2021. It is indeed pleasure to have you with us, sir. I now request Assistant Governor Rotarian Ashokji to address the gathering. Respected dignitaries on the dais, Galaxy of PDG, President, Secretary of this year, all district officers and Rotarians and aunts. I am reading the message of District Governor Asha Venugopalji. Dear Rotarian, fellow Rotarians, it is indeed a privilege for me to serve our District 3030 in the Rotary year 2023-24. I am honored and humble at the faith you have shown in me. This past year, our district has brought incredible service to those in need all our communities. I thank every Rotarian of District 3030 for having given me an opportunity to once again channelize our resources for the right cause. As we see down the new Rotary year and cross over from imagine to creating hope in the world, we have shoulder with more responsibility towards our community. We must make certain that we motivate others by living the four-way test and being true to the objects of Rotary International. Society at large is struggling to overcome the challenges and the setbacks we face because of pandemic, economic crisis, unemployment, mental diseases are some of the impacts that we have to deal with. Our RI President, Jordan McNally, has given us inspiration theme, create hope in the world. Create hope in the world. We must become light of our goal is to restore hope by putting a greater emphasis on peace. The theme of our district of this year is Asha Rika, a ray of hope. We must continue the good work of predecessors initiated. Along with diversity, equity and inclusion, that is DEI, and mental wellness, Rotary International 7 areas of focus must be our priority. In the coming year, let us work together and do much more for the betterment of our community by being willing to change and by the ray of hope. Let's hope meaningful year and enjoy that we do. Let's create the hope in the world. Wishing best wishes to incoming President, Secretaries and Board of Directors. Thank you so much. It is indeed an honor for the club to have with us this evening past District Governor Dr. Satish Sure, a person par excellence, an ophthalmologist by profession, past District Governor of District 3030, a very well-known personality in Rotary as being a Rotarian in form and in spirit, a true Rotarian in its true sense. We are indeed glad to have you with us today, sir. I request you to address this august gathering. Almighty, the great architect of the universe, President Uday, dignitaries on the desk, dignitaries of the desk, ladies and gentlemen, नमस्कार. कारण मला वाटतं हिंदी खूप झालं आहे, इंग्लिश खूप झालं आहे, थोडंसं मराठी चालून जाईल. काय झालं की मला एक मागच्या आठवड्यात फोन आला की सतीश, यू हॅव टू कम ॲज अ guest of honor. And to tell you frankly, as a past district governor of the last century, कारण मी 97-98 चा गवर्नर है, तर मैं तो यही सोच रहा था कि कोई मेरे कारवां मुझे न बुलाएगा, हंसकर बोलेगा सतीश तो अब जईफ है, वो सतीश, उसको आराम की ज़रूरत है. बायको मागे उभीच होती. बायको म्हणाले, अहो तुम्हाला कोणीतरी मामा बनवतोय म्हणे.
बायकोला म्हटलं मामा नाही बनवत, मी खरोखरच उदयचा मामा आहे म्हटलं. आणि मग मला बायकोने ॲज युजल उपदेश केला की तुम्ही जास्त भाषण देत बसू नका, उदयला फक्त तुम्ही आशीर्वाद द्या. म्हटलं मी उदयला आशीर्वाद देणार आहे आणि त्याचबरोबर उदयला मी थोडेसे माझ्या अनुभवाचे काही बोल पण सांगणार आहे. बोल उदय, काय आशीर्वाद देऊ? आशीर्वाद देणार नाही, कारण उगीच काय जास्त म्हातारा झाल्यासारखं वाटतं आशीर्वाद देताय ना. मी परमेश्वराजवळ प्रार्थना करतो तुझ्यासाठी. हे प्रभो, उदयला शिवाची मती दे, त्याला रामाची कृती दे, त्याला कृष्णाची नीती दे, त्याचं हृदय उन्मेषशाली कर, पण त्याला थोडं संयमी पण कर. आणि मी जेव्हा थोडं संयमी कर म्हणून असा पाहत होतो तेव्हा तिकडनं व्ही डी देशपांडे दिसला आणि व्ही डी हसला की मामाला एवढंही कळत नाही, उदय एवढा शांत माणूस, इतका मितभाषी माणूस, त्याचं चालणं बोलणं वागणं कसं एखाद्या संतासारखं आहे. आणि त्याला म्हणे मामा म्हणतो की तू संयम. बरं, त्यांनी काय ऑर्गनायझेशन रन केले असं नाही. मी आता त्याचं ते पाहत होतो, लेट ब्रिंग म्युझिक टू द रोटरी वर्ल्ड. आणि मला आठवतं की उदयन त्याच्या मित्रांना एक कल्पना चावली आणि मग त्या लोकांनी म्हणून एक सप्तक नावाची संस्था निर्माण केली. आणि ती संस्था, ती संकल्पना नागपूरकरांना एवढी भावली की आज ती प्रत्येकाच्या मनात जाऊन बसली आहे. आणि अशा संस्थेचा जो सेक्रेटरी 42 वर्षापासून आहे त्याला मी म्हणतो तू संयमी हो म्हणून. पण उदय, ती संस्था वेगळी आणि रोटरीमध्ये टू बी प्रेसिडेंट हे थोडं वेगळं आहे. कारण दिस इज ऑर्गनायझेशन ऑफ इलाइट पीपल, ऑर्गनाइजेशन ऑफ पीपल विथ ईगो. और कहने को तो प्रेसिडेंट का रुतबा होता है बड़ा अजीम, मगर उसकी कदरें उसका जोरमा हो जाती है. आणि तुम्ही विम्बल्डन मॅचेस पाहत असाल तर एक जुना विम्बल्डनचा प्लेअर होता जॉन मॅकॅनरो. ही यूज टू से की पीपल लव सक्सेस बट दे हेट सक्सेसफुल पीपल. आणि म्हणून तुला मी जे म्हटलं आहे, तुला थोडं संयमाने जावं लागणार आहे. मगाशी आम्ही त्या मिलिंदच्या रूममध्ये बसतो होतो इन्स्टिट्यूटच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्समध्ये, आणि तेव्हा वेद, कारण मी त्याला पंडितही म्हणतो, पंडित म्हणाला की उदयला की अरे तुम तो आज के नवरदेव हो बोले. मी त्याला थोडं करेक्ट केलं, म्हटलं तो नवरदेव नाही, तो आजची नवरी आहे. आज त्याचं लग्न होतं आहे प्रेसिडेन्शियल चेअरशी. आणि या नवरीला पहिल्या दिवशी कळत नाही, कारण तिचं इतकं कौतुक असतं लग्नाच्या दिवशी. हा काय सुंदर तिचं शालू, काय तिच्या गळ्यातला तो हार लफ्फा काय ते वगैरे. पण तिला हे कळत नाही की तिच्या गळ्यातल्या फुलांचा जो हार असतो त्याच्यातला रंग उडायच्यात घरचे लोक रंग दाखवतात. आणि तुझ्या क्लबमध्ये उदय, तुझा क्लब इतका सिनियर क्लब आहे की इथे खूप पास्ट प्रेसिडेंट आहेत जे सासवासारखे तुला वागवणार आहेत, आणि खूप मेंबर्स आहेत जे ते तुझ्यावर नवरेशाही करतील. आणि या सगळ्यांना तुला सांभाळून घ्यायचं आहे. चंदू गेला का मेश्राम? चंदूला मला एक न्यूरो फिजिशियन आठवतात की डॉक्टर लिव बिशू म्हणून. आणि डॉक्टर बिशूंनी सांगितलं होतं की त्यांनी नवऱ्यांचं ॲनालिसिस केलं आणि त्यांनी सांगितलं की जगात 6 प्रकारचे नवरे असतात. 7 प्रकार. मी तर आहेच. उदय, द्रौपदीला 5च नवरे होते रे, तुला तर 7 नवरे राहणार आहेत. आणि सगळ्यात तुम्ही पाहाल जर तुमच्या क्लबमध्ये तर तुम्हाला अशा प्रकारचे नवरे, अशा प्रकारचे मेंबर्स तुला सापडतील. नंबर 1चा नवरा असतो टर्रेबाज नवरा, जो सुलतानशाहीवाला नवरा असतो. त्याचा शब्द हा घरातला कायदा, त्याला कोणी काय विचारायचं नाही, तो जे बोलेल ते ऐकायचं. आपल्या रोटरीमध्ये सुद्धा असे काही लोक असतात, त्यांचा शब्द हा तुला ऐकावाच लागतो. त्यांनी म्हटलं या मेंबरला बोर्डमध्ये घे तर तुला त्याला घ्यावंच लागेल, त्याला तुला प्रत्येक बोर्ड मीटिंगमध्ये बोलवावंच लागेल. तुला जास्त त्याला काही विचारत होतो म्हणा की
उदय को इतना भी नहीं समझता, बार बार आके मेरे को पूछता है. आणि तेच तू त्याला नाही विचारलं उदय खुद को क्या समझता है, मेरे को पूछता भी नाही. त्यामुळे अशा लोकांपासून थोडं सांभाळून राहायचं. दुसरा नवरा असतो, नवरा तो अति मवाळ नवरा. तर काय पगार मिळाला की येऊन बायकोच्या हातात ठेवून देतो. त्याला स्वतःचं मत नसतं, कुठल्याही परिस्थितीत कुठलं मत तो व्यक्तही करत नाही. देर इज नो क्रिएटिव्हिटी इन दॅट मेंबर. हां, पण ही इज व्हेरी गुड टू फॉर पेमेंट ऑफ अ ड्यूज. तो पेमेंट बरोबर करतो ड्यूजचा. तिसरा नवरा असतो, तो असतो कृपण नवरा, कंजूस नवरा. आणि हा कंजूस नवरा बायकोसाठी साडी तर सोडून द्या, पण कधी गजरा पण आणत नाही हो तिच्यासाठी. तो असा कृपण मेंबर जेव्हा आपल्या क्लबमध्ये असतो तेव्हा तो गप्पा 4 हात लांब करतो, पण खिचात कधी हात टाकत नाही. आणि तू जर काय थोडे पण जर का ड्यूज वाढवले तर ही विल बी द फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट. याचं लक्ष बायकोच्या पेक्षा तिच्या बापाच्या पैशावर जास्त असतं. त्यामुळे असा मेंबर हा तुझ्या अकाउंट्सवर खूप लक्ष ठेवून राहील. त्यामुळे जरा सांभाळून राहा. चौथा नवरा असतो, तो म्हणे की बायकी नवरा. बायका मला माफ करतील, बायकी म्हणजे थोडा गॉसिप लविंग, हलक्या कानाचा. तो जाऊन एकदा उदयला सांगेल की अरे तो सेक्रेटरी काय म्हणतो की ह्याला उदयला काही कळत नाही वगैरे. आणि उदयला याला त्याच्या कारणानं सांगेल, सेक्रेटरी सांगेल अरे उदय बोलताय, अरे वो सेक्रेटरी कुछ काम काही नाही. या लोकांपासून तुला अत्यंत सावध राहावं लागणार आहे. आणि पुढचा नवरा असतो, तो असतो रंगेल नवरा. हा रंगेल नवरा काय आहे, हा बायकोसाठी गजरा तर आणतो, पण ज्या दिवशी सुट्टी असेल तेव्हा घरी बायकोची खूप छेड काढतो. आणि पोरांना म्हणतो अरे चला रे आज आपण पिकनिकला जाऊ, पाणीपुरी खायला जाऊ. असे जर रंगेल मित्र जे असतात तुझे जे मेंबर्स असतील, ते रंगेल मेंबर्सना तू प्लीज पकडून ठेव. तुझ्या प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये तुला ते कामाला येतील. त्यामुळे अशा सगळ्या मेंबर्सना उनको आपको समझना है, उनको आपका धैर्य से सुनना है, उनको आपको सम्मान देना है, संयम के साथ उनके साथ रहना है. एंड दैट विल बी द की फॉर युअर सक्सेस. सफलता के आप एक केला एक राज बन जाएगा वो. तुला या सगळ्यांना एकत्र बंफून बांधायचं आहे. आणि आपण रोटरीमध्ये आहोत ते कशासाठी, आपण रोटरीमध्ये आहोत तर सेवा करायला आहे. आणि आम्ही आमचे स्वामी चिन्मयानजी नेहमीच म्हणायचे की 2 किस्म के प्यार के बॉन्ड होते हैं बोले. एक लो लेवल का बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड ऑफ एन अफेक्शन, स्नेहाचा बंध. and this is a higher thought of a love का bond which is called as a bond of a devotion or bond of bhakti. आणि हे दोन्ही बॉन्ड्स आपल्या रोटरीमध्ये आहेत. त्यामुळे इफ यू कॅन हॅव अ नाईस हार्मोनियस फेलोशिप, ज्याने तुझ्या क्लबचं एक सुंदर घर बनेल, आणि त्या हार्मोनियस अशा त्या क्लबच्या घरामध्ये जेव्हा भक्ती शिरेल तेव्हा तुझ्या क्लबचं मंदिर बनेल. आणि एक लक्षात ठेव, स्वामीजी नेहमी म्हणायचे भक्ती जेव्हा मनात शिरते तेव्हा ती ध्यान बनते, पण भक्ती जेव्हा कृतीत उतरते तेव्हा ती सेवा बनते. अँड व्हॉट इज सर्व्हिस? वी आर मेंबर्स ऑफ सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन. सर्व्हिस इज नथिंग बट लव इन ॲक्शन. आणि त्यामुळे तुला या सगळ्यांना जोडून तू जर निघाला तर तुझं वर्ष फार सुंदर असं जाईल वर्ष. उद्या मला जास्त बोलायचं नाही आहे, पण एक फक्त मी केलेली एक चूक जी आहे ती तू करू नये एवढंच सांगतो आहे मी तुला. काय स्टील रिमेंबर की आपण जो प्रोजेक्ट करतो ना, तर मेनी टाइम वी डू प्रोजेक्ट आउट ऑफ what we call as pity. We call it out of pity. It should not be done out of pity. It should be done out of empathy. मी एक रेग्युलर, मी जेव्हा 91ला प्रेसिडेंट होतो तेव्हा जुलैचं पहिलं काय प्रोजेक्ट असतं आपलं, थोडीफार झाडं लावायची, शाळेत जायचं, गणवेश आणि पुस्तक वाटप करायचं. मी पण तेच प्रोजेक्ट केलं. आणि उदय तेव्हा तू जसं आज वेदला बोलवलं ना, तसं ते मी माझ्या एका शिक्षक फार छान टीचर होते त्यांना बोलवलं ॲज अ चीफ गेस्ट म्हणून. आणि वेन आय अप्रोच ही म्हटलं की सर असं असं मी प्रोजेक्ट करतो आहे, तर तुम्ही माझी इच्छा आहे की तुम्ही तिथे माझं चीफ गेस्ट म्हणून यावं. आणि त्या माझ्या शिक्षकांनी मला फ्लॅटली नाही म्हटलं. आय हॅड टू प्लीड टू हिम. आय सेड सर मी तुमचा आवडता विद्यार्थी होतो सर, माझ्या या प्रोजेक्टला तुम्ही यावं अशी माझी खूप इच्छा आहे. ठीक
ठीक आहे म्हणे सतीश, तू म्हणतोय तर मी येईन म्हणे, पण तुला माझी एक अट मान्य करावी लागेल. म्हटलं साहेब मान्य. कारण मास्तर माणूस, माझे वडील मास्तर होते, मला माहिती मागून मागून काय मागणार आहे मास्तर. ते म्हणतील मला मानधन दे काहीतरी, किंवा माझ्यासाठी गाडी पाठव मला न्यायला. म्हटलं सर ॲक्सेप्टेड, युअर कंडिशन इज ॲक्सेप्टेड. त्यामुळे सतीश तू माझी कंडिशन ऐकलीच नाही म्हणे. म्हटलं सांगा सर तुमची काय कंडिशन. त्यामुळे तुम्ही सगळे डिग्निटरी जेव्हा डेस्कवर येऊन बसाल तेव्हा प्रत्येकाने आपल्या पायातल्या चपला काढायच्या, जोडे काढायचे आणि सगळ्यांनी मला मारायचं म्हणे. आय सेड सर व्हॉट इज दिस, हाऊ कॅन यू आस्क फॉर सच अ कंडिशन. त्यामुळे तुला लाज नाही वाटत का रे म्हणे. देशाला आज स्वातंत्र्य म्हणून 45 वर्ष झाले म्हणे, पोरांना शिक्षणासाठी पुस्तकं नाही आहेत, त्यांच्या शाळेत जायला त्यांना गणवेश नाही आहे, अशा परिस्थितीची लाज वाटायची. तर म्हणे त्याचा तू समारंभ करतोयस म्हणे. आणि फॉर अ मिनिट आय कुड नॉट से एनिथिंग टू हिम. अँड देन आय टोल्ड हिम सर, पण मॅटर ऑफ फॅक्ट इज दॅट की खरोखरच आज त्या पोरांजवळ पुस्तकात गणवेश नाही म्हणून मी देतो आहे त्यांना. तुम्ही रोटरीवाले लोक काय आहेत म्हणे, तुम्ही स्वतःला खूप दानी समजता आणि त्या लोकांना दीन समजता म्हणे, आणि मग तुम्ही त्यांचा आत्मा मारता म्हणे. त्यामुळे एक कर म्हणे, तुला जर पुस्तकं द्यायची असतील, गणवेश द्यायचा असेल तर त्या पोरांना सांग की मी तुम्हाला दान देत नाही, मी तुम्हाला लोन देतो आहे. आणि हे लोन तुम्ही मोठं झाल्यानंतर समाजाचं ऋण म्हणून तुम्हाला फेडायचं आहे. आणि हे मी तुम्हाला जे लोन देतो आहे याच्यावर मला तुमच्याकडनं इंटरेस्ट पण हवा आहे. म्हटलं सर त्यांना काय इंटरेस्ट मागू मी, ते देतील म्हणे इंटरेस्ट. अरे तंबाखूच्यासाठी अँटी टोबॅकोचं काम फक्त काय त्या मदन कापरेने करायचं का रे म्हणे. नाही, तू त्यांना सांग तुम्ही घरी जाऊन आपल्या आईवडिलांचा तंबाखू सोडवा. तुमच्या एरियामध्ये जाऊन तुम्ही प्रत्येकजण आपापल्या घरासमोर एक एक झाड लावा, आणि हे तेवढं नक्की ते करू शकतात म्हणे. हे जर तू केलं तर यू विल नॉट किल देम बाय युअर काइंडनेस, नायदर यू विल किल देअर पॅशन टू क्रिएट अ होप फॉर बेटर लाईफ इन फ्युचर. म्हणून मी तुला म्हणतो आहे की याच्या पुढचं प्रोजेक्ट तू जे करशील त्याच्या पुढचं प्रोजेक्ट तू करताना फक्त थोडंसं एम्पथीनी प्रोजेक्ट कर. आय नो तू म्युझिकचं प्रोजेक्ट करणारच आहे, आणि यू वॉन्ट टू ब्रिंग दॅट म्युझिक इन द रोटरी वर्ल्ड लाईक यू हॅव ब्रॉट म्युझिक इन नागपूर सिटी. सेम टाईम थोडंसं इमॅजिन करून जाशील, आणि मग देन यू हॅव टू क्रिएट होप इन दोज पीपल. तू सितार वाजवतो, आय नो. उदय इज अ व्हेरी गुड ऑल इंडिया रेडिओचा ए ग्रेड आर्टिस्ट आहे. पण उदय तुला कदाचित आठवत नसेल, सितार हे नाव हॅज कम फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड सेतार. 3 तारेचं इन्स्ट्रुमेंट. त्याला अमीर खुसरो साहेबांनी इमॅजिन करून त्याला इनोव्हेट केलं, आणि इट हॅज बिकम नाव अ क्लासिकल इन्स्ट्रुमेंट. लाईक शिवकुमार शर्माने जसं ज्यांना सेम थिंग ते लोकवाद्य जे होतं काश्मीरचं त्याचं त्यांनी संतूर केलेलं आहे. आय वॉन्ट यू टू यूज युअर ऑल टॅलेंट फॉर इमॅजिनेशन, innovation, so that you can create a hope in the world for the downtrodden people. Wishing you all the best. I know people are here. सगळ्या लोकांना आस्वाद घ्यायचा आहे आमच्या पंडितजीच्या भाषणाचा, आणि त्याच्यानंतर आम्हालाही पण जेवणाचा आस्वाद घेताना आईस्क्रीम मिळेल, आणि आईस्क्रीम पण मिळणार आहे. त्याचे आम्हाला त्या आयरिश क्रीमवरनं फक्त मला एकच शेवटचं सांगायचं आहे, मी त्याला अजून आशीर्वाद दिला नाही. मी त्याला आयरिश ब्लेसिंग देणार आहे. दॅट आयरिश ब्लेसिंग सेज, लेट द रोड राईज टू मीट यू, लेट द विंड बी ऑलवेज ॲट युअर बॅक, लेट द रेन्स फॉल स्विफ्टली ऑन युअर फील्ड, and let my almighty God hold you safely in the palm of his hand. Namaskar. थँक्यू सो मच सर. एकदा कडकडून टाळ्या होऊन जाऊ देत. जसा गीता सार असतो, आज आपण रोटरी सार ऐकलेला आहे इकडे. थँक्यू सो मच सर फॉर युअर एनलाइटनिंग वर्ड्स. A starlight evening indeed. Glad to have with us Dr. Ved Prakash Mishra as our chief guest. I request past President Dr. Vivek Deshpande to introduce our chief guest. Dignitaries on the stage and esteemed members of the audience, it's a thrill for me
to introduce the learned Honorable Dr. Prakash Mishra, sir. Just like Uday is under a thrilling sensation since we met him just before beginning of this evening, nostalgia has also descended upon me. Because we, people like Uday, I, and Dr. Shriram Kane, Dr. Mundle, we have been friends with Dr. Mishra since the last 50 years. Looking at me, if you can believe it, then believe or don't. And just because I didn't want to waste time recounting his achievements and accomplishments, I have had Prasanna put it on this slide, and what you are seeing is less than 1/20th of his total oeuvre, his total CV. Particularly, I would like to mention that he has DSc honoris causa from not one, but 5 statutory medical universities in India. His own university, the Tamage Institute of Medical Sciences, deemed university, conferred upon him a degree of Doctor of Medical Sciences honoris causa. He has ornamented many important positions in the field of medical education. So we are in the presence of perhaps the greatest luminary the field of medical education has seen, the most conspicuous educationist in medicine. Now, just recounting a great man's achievements, his groundbreaking work, is not enough to introduce him as a person. So the person behind that legend is a completely different entity. In private life, Dr. Prakash Mishra has always been a light-hearted, fun-loving man. We have seen that from our student days. He is endowed with a great sense of humor, and moreover, that humor has the support of a devastatingly fast wit. So in casual conversation, when you chat, you say something innocently, and before you can blink your eyes, he's back at you with a very fast repartee that will leave everybody in splits of laughter. So that is how we looked for Ved Prakash in the college days. If you wanted to find him, you only looked at for a crowd of boys which was bursting into laughter every now and then. In the center of that crowd would be Dr. Ved Prakash Mishra. The other aspect of his personality which emerged in those days was he was a keen student of all socio-political economic developments in the world around him. We never bothered about that. And out of that emerged his interest in medical education. So he made a big decision when we passed MBBS. He could have commanded admission in any big university in the world for any newest, latest, most modern super specialty stream. But giving up that temptation, he went into medical education. He took up the study of physiology. And now, over the past many years, he has been helming the Committee of Postgraduate Education in the erstwhile MCI and then NMC. And as a result of his efforts, what is being followed in medical universities around the country and abroad is something called as competency-based medical education, which is a new system of teaching and learning in medical colleges. So such is the great man for whom you are waiting. He is going to deliver a speech which will be a treat. Let us welcome Dr. Ved Prakash Mishra, sir, with a warm applause. Esteemed the newly installed President, a friend from my adolescent days till this date, maintaining the feverish pitch to a constant plateau, Dr. Uday Gupte, a person in whom I have had the privilege of being benefited as a philosopher, as a notable guide, and also with his permission, if I can say so, a friend, a role model whom I have always looked up to, not for the purposes of imitation, but for the purposes of emulation.
respected Dr. Satish Sude, dignitaries on and off the dais, and especially my teachers who shaped me, Honorable Dr. Mrs. Sude, Honorable Dr. Pathak, Honorable Mrs. Pathak, Honorable Dr. Praful Mukaddam, and a senior whom I always looked up to with a sense of pride and envy in combination, respected Dr. Madan Kapre, Dr. Kiran Kulkarni. I can name several faces present across the audience, respected Nilima Tai, ladies and gentlemen. I am really finding a limitation today because I cannot take that liberty which a mama is entitled to take. Therefore, I am expected to be absolutely talking at the installation ceremony of a very darling friend, dear friend, intimate friend. And therefore, standing that liberty, I have nothing to advise him. The only thing which I am wanting to put across to this learned gathering is, be it Dr. Uday, be it Dr. V.D. Deshpande, be it Dr. late Vivek Kulkarni, two things which absolutely were lit large in every action of theirs, which I am proud to say that for last 50 years they have been upholding in totality. It was sincerity at one end and serenity at the other. A rare combination, ladies and gentlemen, which is very difficult to come across. And therefore, I am absolutely sure that the trends and traditions of Rotary, the benchmarks which have been set out by people of eminence sitting over here, including my learned childhood friend, Dr. Vishwas Sahasrabhujani, and many others, I can assure you that my friend Uday Gupte, he will not only be in a position to be stepping his feet onto those footprints which have been laid down, but to the utter pride of all of us, he will be able to create his footprints also. That I can assure. Ladies and gentlemen, one thing we need to always decipher for ourselves very clearly. समाज अवधारणाओं के तहत चलता है और समाज की अवधारणाएं आकस्मिकता से निर्मित नहीं होती। समाज को चलने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्व आसमान से नहीं टपकते, नेतृत्व जमीन से नहीं उगते। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप जो लोग अपने आप को ढालने की ताकत रखते हैं और उनके साथ ढलकर उन्हें प्रथम पुरुषीय दिशा निर्देश कर सकते हैं, they turn out to be the emulative role models in society. समाज कभी दीवार के ऊपर में टंगे हुए तैल चित्रों से निर्मित नहीं होते। दीवार पर टले हुए तैल चित्र अनुमोदित करने की ताकत रखते हैं, रेखांकित करने की ताकत नहीं रख पाते। अधोरेखांकन की क्षमताएं उनके अंतर्गत नहीं होती। उसकी इस मर्यादा की परिपूर्तिता का केवल एक आधार होता है कि दिशा निर्देश के लिए कहीं कोई प्रथम पुरुषीय नेतृत्व मिल जाता तो अच्छा होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस देश के अंतर्गत सेवाभावी संस्थाओं, जिनके अंतर्गत मैं रोटरी को अग्रगामी मानता हूं, मुझे बहुत खुलूस और बहुत एतबार के साथ कहने का एहतराम होता है कि सामाजिक संदर्भों को जिस प्रामाणिकता के साथ पकड़ने का प्रयास इस देश की सेवाभावी संस्थाओं ने किया, अपने आप में उसमें अनोखापन है, उसमें कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता दीख पड़ती है। अदरवाइज डॉक्टर एडवोकेट सोनी जैसे लॉयर्स यहां बैठे हुए हैं, मुझे यह बताइए, संविधान ने यह जिम्मेदारी क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दी हुई है? The Constitution mandates that ultimately, why did we evolve the Constitution?
The constitution of this country, ladies and gentlemen, you and me as citizens, it was evolved for the purposes of generation of a welfare state. लोक कल्याणकारी राज्य संकल्पना इस देश के संविधान का मूल है और ये संविधान के तहत the onus of this welfare state incarnation has been vested with what has been defined as a state, and state is defined under Article 12 of the Constitution of India. Service organizations are not state in the country. Therefore, what is mandated out of the state, which is a constitutional creation, if the obligations dispensed thereof are not fulfilled, if the legitimate expectations of the peoples are not in a position to be dispensed in the mode and manner in which they are required to, in that situation, if the poser which has been put in by respected Dr. Sole की 45 वर्षानंतर तुमच्या आजादीच्या इतक्या वर्षानंतर जर विद्यार्थ्याला गणवेश द्यायची पाळी तुमच्यावरती येत असेल तर हे दुर्दैव कोणाचा? त्या विद्यार्थ्याचा की या देशातलं फेल्ड स्टेटचं? हे यक्ष प्रश्न कुठे ना कुठे आपल्याला उत्तरित करावं लागेल. आणि म्हणून सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन्स माझ्या मते सरळ जबाबदारीनं सांगतो की त्यांना या देशात कॉम्प्लिमेंटरी स्टेट्सचा दर्जा आहे आणि देयरफॉर दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री. मैं इस मनोधारणा के साथ आपसे बोल रहा हूं. स्टेट की असफलताओं और विफलताओं के ऊपर में मरहम लगाने का काम नहीं, उसकी अधूरी और अधकचरी जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प जब निष्ठा के साथ प्रतिपादित होता है और उन जिम्मेदारियों को बोझ के लेने के लिए सबल कंधे एकजुटता के साथ प्रामाणिकता से प्रयास करने के लिए तत्परता के साथ जुट जाते हैं, तब विश्वास मानिए सेवा विदाउट मेवा, इसके अलावा वो कुछ नहीं होता. इट इज दिस डिस्टिंक्शन विच मेक्स मी फील कि सचमुच इस देश के अंतर्गत आप जैसे कर्मठ लोग स्थायी भाव के साथ समाज की उपेक्षित जिम्मेदारियों को पूरा करने का जिगर रखते हैं, जिगराना रखते हैं और उसके प्रति समर्पण के भाव से कार्य करने के लिए तत्पर हैं. हम उस संस्कृति के अंतर्गत ढले हैं जिसकी दुहाइयां हम कदम कदम पर देते हैं. आपने बहुत प्रामाणिकता से कहा, दान की व्याख्या जितनी यथोचित शब्दों के अंतर्गत नारद मोह पुराण के अंतर्गत की गई है, मैं समझता हूं दान की व्याख्या उससे बेहतर न कभी हुई और न कभी हो सकती है. 10 वर्ष का बालक ध्रुव क्या चाहता था? केवल अपनी पिता की गोद में बैठना चाहता था. मां समझ गई पिता की गोद में अपने ध्रुव को नहीं बिठा पावेगी, क्योंकि वहां पर सुनीति का गोद में बैठा हुआ है. सुनीति के बैठे हुए बेटे को उत्पानपाद अलग नहीं कर पावेंगे, इसलिए वो उसे समझाने के लिए कह देती है कि बेटे पिता की गोद से परम पिता की गोद बड़ी होती है. 10 वर्ष का बालक पिता की गोद छोड़कर परम पिता की गोद को ढूंढने निकल जाता है. धरती कांप उठती है कि अगर ढूंढ लिया तो क्या होगा, इसलिए तब नारद को बीच में खड़े होकर के उसे समझाना पड़ता है. नारद से सवाल करता है. कठोपनिषद और नारद मोह को जोड़ करके हम पढ़ें, इसका उत्तर मिलेगा. ध्रुव प्रश्न करता है कि परम पिता की गोद में बैठने का हक अगर मेरी मां मुझे देना चाहती तो आप मुझे क्यों रोकते हो? वो कहता परम पिता की भी गोद से बड़ी गोद इसी संसार के अंतर्गत प्राप्य है. वो गोद कौन सी है, वो गोद कैसे मिलती है? और तब उसे समझाते हुए कहते हैं कि वो गोद केवल मनोभाव के साथ किए गए उदारता और सहृदय के रूप में दिए गए दान के अलावा दूसरी कोई महिमा उस परम पिता की गोद के बराबरी की नहीं होती. रायगढ़ के किले के अंतर्गत जाकर के उन 2 पायरियों को जो भवानी के मंदिर की ओर आपको लेकर के जाती हैं, उस हिंदोलीकर की याद दिलाती हैं, जिसे किले की बनाने की जिम्मेदारी धन के अभाव में शिवाजी चले गए हैं और किला बनना है. सारी अपनी प्रॉपर्टी बेच करके उस किले को पूरा करता है. महाराज को पता चलता है. महाराज पूछते की हिंदोलीकर तुम्हाला काय पाहिजे मला सांगा. तो मग तो सांगतो की मला सध्या काही नको, पण आपल्या जेव्हा राज्याभिषेक होईल तेव्हा मी आपल्याला मागेन. राज्याभिषेक त्या किल्ल्यावरती होतो आणि तेव्हा सगळं संपल्यानंतर त्या हिंदोलीकरांना विचारतात की माग, तू सांगितलं होतं की आजच्या दिवशी तू माझ्याशी मागणार आहे, माग तुला काय हवं आहे? तो म्हणतो महाराज मला त्या 2 पायऱ्यांवरती काहीतरी कोरायचं आहे आणि त्या 2 पायऱ्या
ज्या भवानीच्या मंदिराच्या दर्शनार्थ तुम्हाला घेऊन जातील आहे, ज्याच्यावरती माझ्या शिवरायाचे पाय पडतील, त्या पायऱ्यांवरती मला एक पायरीवरती त्याग लिहायचा आहे आणि दुसऱ्या पायऱ्यावरती सेवा लिहायचा आहे. त्याच्यावरती आपले पाय पडले तर माझी त्याग आणि माझी सेवा धन्य होऊन जाईल. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, महात्म्य ये ठीक, अगर आधुनिकता के अंतर्गत देखें तो हिंदोलीकर का वह सब संपूर्ण रूप ठीक उस वर्णन के साथ जुड़ता है, लेकिन दान की व्याख्या के अंतर्गत 3 अनुबंधों को जोड़ा उन्होंने. दान कालानुरूप होना चाहिए, आवश्यकता के अनुरूप दान होना चाहिए. दान औदार्य के साथ उस चीज का हो जिसका कोई उपयोग उस काल के अंतर्गत न हो, उस दान का क्या उपयोग. दान कालानुरूप होना चाहिए, केवल कालानुरूप नहीं होना चाहिए, आवश्यकतानुरूप होना चाहिए, आवश्यकता के प्रमेय के साथ जुड़ना चाहिए. केवल कालानुरूप और आवश्यकतानुरूप न हो, उसमें कर्ता का अभाव होना चाहिए. आणि इथे सगड़ी मेख आहे. बस एक जगह मामला आकर के गड़बड़ा जाता है. दान हो, दान दिया जाए, दान दीख पड़ना चाहिए, दान प्रमाणित होना चाहिए, लेकिन दान का कर्ता नहीं होना चाहिए. और इसे समझाते हुए नारद कहते हैं कि वो दान अभागा है, वो दान कलंक है, वो दान अभिशाप है और वो दान पाप है, जिसके अंतर्गत देने वाला दाता बनकर के श्रेष्ठ हो जाता है और पाने वाला दीन बनकर के हीन हो जाता है. दान अगर अंतर पैदा करता होगा, दान अगर दीनता और हीनता को स्थापित करने वाला होगा, दान अगर दानशूर बनाता होगा और दानशूर बन जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत पाने वाला अगर याचक बनता होगा, इससे दुर्दैव किसी दान का दूसरा नहीं हो सकता. दान गुप्त होना चाहिए, ये उसके पीछे की धारणा है. क्योंकि दान देने वाला दानशूर जिस व्याधि से प्राप्त होता है उसी का नाम अहंकार है, और वही अहंकार धीरे धीरे मद में कब रूपांतरित हो जाता है ये पता तक नहीं चलता. इसी की व्याख्या मृत्युप्राय कर्ण जब कृष्ण से पूछता है कि मेरी मौत का कारण क्या, मुझसे बड़ा दानशूर दूसरा नहीं, तो फिर मुझे इस अधोगति की प्राप्ति का क्या कारण है, जिसका उत्तर जो नारद ने ध्रुव को दिया था उसे ही गीता के अंतर्गत या महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत उच्चारित करने का काम भगवानुवाच के माध्यम से हुआ है. मैं इन संदर्भों को केवल इसलिए पकड़ना चाहता हूं, मैं केवल इन संदर्भों को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि यह हमारी काल्पनिकता का विषय नहीं है. पाश्चात्य दुनिया इसे समझे ना समझे, उनके संदर्भ हमसे मेल खाएं या ना खाएं, लेकिन ये तो हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. इसके तो हम उत्तराधिकारी हैं, इसके तो हमें कालवाहक बनना चाहिए. और इसलिए मैं कहता हूं कि निश्चित तौर के ऊपर में जिन जिम्मेदारियों का बोझ, द वेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज विच हैव बीन टेकन इन अ रेस्पॉन्सिव एंड रेस्पॉन्सिबल मैनर. आपने एक बहुत छोटे से शब्द के अंतर्गत गागर में सागर भर दी सोड़े सर. जिंदगी में पिटी से किया जाने वाला काम पिटिएबल है, सिंपैथी के नाम पर किया जाने वाला काम एक्सप्लॉइटेटिव है, पर एम्पैथी के नाम पर किया जाने वाला काम ही सात्विक है. मुझे मैडम ने पढ़ाया कि दुनिया में कोई किसी का दर्द नहीं बांट सकता. शिकवलं ना, बायोलॉजिकल पेन ज्याचं असते त्यांनाच भोगावं लागतं. शिकवलं ना, रिसेप्टर त्याचं, इफेक्टर त्याचं, इंटिग्रेटर त्याचं, स्पायनोथॅलेमिक ट्रॅक्ट त्याची, थॅलेमस त्याचं, मग दर्द कुणाचा? त्याचाच त्याचा. पेन कैनॉट बी शेयर्ड, देयर इज नो शेयरिंग ऑफ बायोलॉजिकल पेन. हम जा करके कहें कि हम तुम्हारे दर्द में शामिल है, इससे बड़ा झूठ नहीं बोलते हैं हम. कोई किसी के दर्द में शामिल नहीं है और कोई किसी के दर्द में शामिल नहीं हो सकता. ये मेरे को सुड़े मैडम ने पढ़ाया, और जो सुड़े मैडम ने पढ़ाया मैंने 35 साल पढ़ाया. पक्का कर दिया कि बायोलॉजिकली पोकादम सर पेन इज नॉन शेयरेबल, पर इसी के साथ समानांतर भी पढ़ा. मैडम सुले के पढ़ाए जाने के बाद में
मैंने साहिर लुधियानवी भी पढ़ा। जो मान्यता विज्ञान के तहत है कि दर्द नहीं बांटा जा सकता, बायोलॉजिकल पेन इज नॉट शेयरेबल, मैंने उसी नब्ज और उसी लफ्ज के अंतर्गत थोड़े सा पढ़ा कि साहिर कहता है कि मेरी खातिर जो आए हैं तुम्हारी आंख में आंसू, बन जाएं शाम मोहब्बत के सितारे आंसू, कौन भला देख सकता है ये प्यारे आंसू, मेरी आंखों में ही आ जाएं तुम्हारे आंसू। जब मेरी आंखों के अंतर्गत आपके दर्द को कांटा आपके पैर में चुभे और आंख मेरी नम हो जाए, उसका जो सिंपैथोमाइमेटिक ट्रैक्ट है वो सिंपैथी से नहीं एम्पैथोमाइमेटिक ट्रैक्ट से पैदा होता है, उसका नाम एम्पैथी है। सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति, और सहानुभूति लिम्बिक से हो तो ठीक है, कॉर्टिकल से हो तो गड़बड़ है। फिर मुझे याद आता है कि मेरे को सुड़े मैडम ने क्या क्या पढ़ा के रखा है, मैं आपको क्या बताऊं। फिर मुझे याद आता है, सुड़े सर आपकी नजर बचा बचा के पढ़ाया, इसलिए होशियार विद्यार्थी हूं। If the tears are born out of limbic system, they are genuine tears. But if tears are creation of cortex, they are crocodile tears. Sympathy crocodile tears की भी हो सकती है, एम्पैथी कभी क्रोकोडाइल टीयर्स की नहीं होती, इसी का नाम एम्पैथी, और इसलिए सिंपैथी को सहानुभूति कहा है और एम्पैथी को समानुभूति कहा है। जब तेरे दर्द के अंतर्गत मेरी नमी इस कदर घुल जाती है कि मानो तू बरसात सी गिरी और मैं मिट्टी की खुशबू में बदला, दिस इज एम्पैथी। इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट एम्पैथी, लेडीज एंड जेंटलमैन, an extension of a hand, which is not for name, which is not for the purposes of identification, which is not just limited for the purposes of depiction of a photograph, and which is not just a photographic event. Take it for granted, then it turns out to be the onus and responsibility of dispensation of a failed state undertaken by alert citizens in the name of Rotary for the purposes of dispensing the role of a complementary state. It's in that context the visualization is necessary. And therefore, आप इस घटनाक्रम को केवल एक सर्विस क्लब की एक्टिविटी के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि आप ना देखें। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मेलघाट के अंतर्गत डॉक्टर मदन कापरे जाकर के ऑपरेशन न करें, अगर सर्च के अंतर्गत कोई अभयभंग जाकर के न बैठे, मैं पूछना चाहता हूं कि शासन के पास में इनका रिप्लेसमेंट और इनकी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए क्या है? ये कौन सी जिद है? ये कौन सी तपश्चर्या है? ये कहां से पैदा हुई? क्यों पैदा हुई? किसके कहने पर पैदा हुई? और ये उदारता और औदार्य अपने आप में एक स्टेट की जिम्मेदारी का निर्वहन है। और इसलिए ये सारी कॉन्शियसनेस, when this alert citizenship, when this conscious citizenship, when this responsible citizenship, when this responsive citizenship, it gets integrated together in whatever banner, be it the banner of Rotary, be it the banner of Lions, be it any banner, then in that situation, what prevails is the spirit of extending a helping hand with a healing touch to those who hitherto have been treated by the state as untouchables, which is a crime in the name of Constitution. If Constitution explicitly bans one thing, ladies and gentlemen, Advocate Soni will bear with me, it is untouchability. Ladies and gentlemen, आप सोच करके देखें कि आवश्यकताओं के अंबार कितने बड़े हैं, रिसोर्सेस का क्रंच कितना बड़ा है, प्रायोरिटाइजेशन हमारी कितनी लॉफ्ट साइडेड है, इनइक्विटीज कदम कदम पर प्रिवेल करती हैं। जिन संदर्भों के अंतर्गत हम आह्वान लेकर के खड़े हैं कि हम दुनिया की चौथी और पांचवी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, मैं आपको शायर की वो पंक्तियां याद दिलाता हूं, जब 26 जनवरी के मनाए जाने वाले गणतंत्र पर शायर लिखता है कि कहां से लाएं जिगर जश्न जनवरी के लिए, ठिकाना जब नहीं रोटी का फरवरी के लिए। जब फरवरी की रोटी का ठिकाना नहीं होता तब जश्न जनवरी कौन से मायने रखती है,
इसका औचित्य वो निर्धारित करें जहां पर बच्चन लिख देते हैं कि तन की हविष मन को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये सारे औचित्यों के बीच कल्पना के कलेवरों के माध्यम से समाज निर्देशित नहीं हो सकते। इनके बीच कहीं न कहीं समानुभूति के भाव को प्रज्वलित करना ही अनिवार्य है। और उस दीपक की रोशनी जब आप जलाते हैं तो आप सचमुच में एम्पथी का एक दीपक जलाकर उस तिमिर के अंतर्गत आलोक का निर्माण करने का प्रामाणिक प्रयास करते हैं। लोग इसकी दाद देते हैं, इस भ्रम में आप न रहें। लोग इसका उपहास और परिहास करते हैं। यांच्या एकट्याचे केल्यानं काय होणार आहे, समस्या इतकी प्रचंड आहे, यांचे हात इतके त्रोटक आहेत, या त्रोटक हातांनी या का समस्यांचं निदान होणार आहे का? मित्रों, ये संदर्भ तो हर किसी के सामने आया, पर इस संदर्भ का भी उत्तर मुझे लगता है मैं आपके बीच देने के लिए खड़ा हूं। इसका उत्तर केवल इतना है कि साहिर के भी जहन में यह सवाल आया था, उसके भी मन में यह यक्ष प्रश्न था कि समस्याओं के इस व्यापकता के सागर के अंतर्गत हमारे अल्प से किए गए प्रयास क्या ये परिवर्तन की आधारशिला बन पाएंगे? संभव तो नहीं लगता। तो फिर इनका औचित्य क्या? व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ ऑल दीज स्मॉल टाइम इनिशिएटिव्स if they are not in a position to go and create a sense of transformation in transcendence, then what's the use and utility of the same? मैं केवल वो 4 पंक्तियों के लिए उदय तुम्हारे बीच आया, और मैं अतिथि के रूप में नहीं, मित्र के नाते आया हूं, इसलिए कहने की हिम्मत कर पा रहा हूं, वरना डॉक्टर सुले के बाद में मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। आपकी व्यावहारिकता के अंतर्गत उनने आपको सारी चीजें बता दी, मैं तो सांसारिकता की बातें आपको बता रहा हूं। केवल यह बताना चाहता हूं कि साहिर इस बात को स्वीकार करते हुए कहता है कि माना कि इस जहान को रोशन न कर सके तो स्वीकार तो कि इस अंधकार के अंतर्गत मैंने कोई रोशनी प्रतिपादित की या कर सकूंगा, यह मुझे विश्वास नहीं, यह मेरी हिम्मत नहीं, मेरी औकात नहीं, मेरी लियाकत नहीं, मेरी काबिलियत नहीं, मेरी कैफियत नहीं। माना कि इस जहान को रोशन न कर सके, पर आगे कहता है उदय, कुछ खार कम किए हैं। खार का अर्थ होता है कांटे। कुछ खार कम किए हैं, गुजरे जिधर से हम जिस रास्ते से गुजरे, हमने कुछ कांटों को कम किया है। इसलिए नहीं कि वो कांटे मेरे पैरों में चुभ रहे थे, मैंने तो अपने आप को उन कांटों से बचा लिया था, पर मैंने कम करने का प्रयास इसलिए किया कि पीछे आने वालों का मार्ग निष्कंटक हो सके। एक बहुत छोटा सा प्रमेय देकर के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। 14 वर्षों के वनवास के अंतर्गत राम, लक्ष्मण और सीता, इनका वन गमन में चलने का क्रम क्या था, इस पर आपका ध्यान और तवज्जो चाहूंगा। चित्रों में और वर्णनों के अंतर्गत यह है कि राम वन गमन में आगे चलता है, मां भगवती सीता बीच में होती हैं, लक्ष्मण पीछे होते हैं। अब इसका कई आध्यात्मिक संकेत कुछ और बताते हैं, व्यावहारिक संकेत कुछ और बताते हैं, सांसारिक संकेत कुछ और बताते हैं। कभी गंभीरता से इसका विचार करिए। जंगल का रास्ता है, पथरीला है, कंटीला है, कांटों भरा है। चित्रकूट के बाद जब राम चले होंगे तो चित्रकूट के अंतर्गत तो पादुकाएं राम ने दे दी भरत को, राम नंगे पैर हो गए, और चित्रकूट से आगे का रास्ता जो राम ने बिना नंगे पैर चला होगा, उसमें चलने का क्रम डॉक्टर कापरे बदला नहीं। पादुका वाला राम भी आगे चला और बिन पादुका वाला भी राम आगे चला। हम ये मान करके चलते हैं कि उनके आगे चलने के कारण सीता को बीच में रखना जरूरी था, क्योंकि रक्षा का भाव लक्ष्मण पर था। ये तो हमारी मानसिकता का सबब है, ये तो एक सांसारिक सिक्योरिटी का दर्शन है। जो निष्पाप भाव उसके अंतर्गत है वो गंभीर है। राम भद्राचार्य इसी का एनालिसिस करते हुए अपने आख्यायिका के अंतर्गत कहते हैं कि राम मानो हम आपको समाज में एक उद्बोधन के लिए उन्होंने ये दिशा निर्देश किया कि इन कांटों से भरे रास्ते पर मैं ये नहीं कहूंगा
कि सीता तुम आगे चलो क्योंकि तुम्हारे पैरों में अभी भी खड़ाऊ है. लक्ष्मणा तू समोर ये, तुझ्या पायात चपला आहेत, मी माझ्या पादुका दिल्या, आता मी मागे चालतो. ऐसा नहीं कहा गया. इसके पीछे का मूल आशय केवल इतना है, कांटों से भरे रास्ते पर चलने वाला राम ये जानता है कि अगर मैंने इन कांटों को अपने पैरों में चुभो लिए तो मेरे पीछे आने वालों का मार्ग निष्कंटक हो जाएगा. इट इज दिस एसेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन. एन इनिशिएटिव विच इज रिक्वायर्ड टू बी वर्कड आउट इज प्राइमरीली, ठीक है, दुश्वारियां हैं, कठिनाइयां हैं, जितनी प्रशंसा है उससे कई ज्यादा गुना हास्य है, उपहास है, परिहास है. हाउ डज दैट चेंज द कॉन्टूर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द किंडलिंग दैट वन इज इंटेंडेड टू. रूखे रोशन के आगे शम्मा रख के कहते हैं, देखें आज उधर जाता है या इधर आता है परवाना. ये जिगर लेकर के जब काम किया जाता है, ये निश्चय लेकर के जब काम किया जाता है, और ये काम करने के लिए मेरे हाथों को थामने वाले जब और सबल हाथ हो जाते हैं, और यह क्रम से चलता है, जो क्रम टूटता नहीं, जो क्रम तोड़ा नहीं जाता. सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत बहुत सुंदर वर्णन किया अशोक भाई ने कि इट्स अ चेंज ऑफ बैटन. जिस बैटन के अंतर्गत कोई मोह नहीं है, जिस बैटन के अंतर्गत कहीं कोई आकर्षण नहीं है, सहजता से लिया और सहजता से दिया. वरना इस सहजता का अभाव जितना आज महाराष्ट्र में है उतना हिंदुस्तान के अंतर्गत आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा. आप विचार करिए, जिस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आज मैं इस पदारोहण समारोह के अंतर्गत हूं, महाराष्ट्र के अंतर्गत घटने वाले घटना के घर के बीच वह दुर्घटना है या यह दुर्घटना है, ये मुझ जैसे सामान्य नागरिक को मुकदम सर समझना कठिन है. वो हादसा है, ये घटनाक्रम है, ये दोनों के बीच का अंतर है. इंसानी जिंदगी हादसों से नहीं चलती. इंसानी जिंदगी घटना को जब क्रमों में बांध दिया जाता है, वह घटना क्रमों से चलती है. घटना क्रमों का यह निर्धारण उस संकेत की ओर इशारा करता है जहां पर एम्पथी दरवाजों पर दस्तक देते हुए केवल आपकी दस्तखत को प्रमाणित नहीं करती, परंतु सेवा का एक दस्तावेज निर्माण कर देती है जिस पर आने वाला समय अपने हस्ताक्षर करता चला जाएगा. इट इज दैट रजिस्ट्री and that register which is not claiming any registration but is only wanting to get registered. That is the connotation, ladies and gentlemen, which is the real spirit which the service organizations like Rotary have been able to kindle in this society of ours, which in my opinion is a ray of hope. Let that ray of hope not decay through the passage of these batons. My record and compliments, thanks and gratitude to the outgoing team for their good work, and absolutely plentiful of good wishes to the new team led by Dr. Gupte, keeping in mind सनी गावस्कर ने अपनी बायोग्राफी के अंतर्गत पान क्रमांक 262 वरती एक वाक्य लिहिलं आहे. Fools are they who think they are born to create records, but wisdom lies in realizing, make a record hoping for sure that it's going to be broken. Records अजरता के लिए नहीं होते, records अमरता के लिए नहीं होते. records जितने अल्पजीवी होंगे समाज उतना प्रगल्भ होता चला जाता है. उच्चांकों के मानक जब बदलते जाते हैं और मानक पिछले मानकों को तोड़कर आगे निकल जाते हैं, यही प्रगति का गमक है. सेवा का गमक, त्याग का गमक, औदार्य का गमक, उदारता का गमक, निरपेक्ष से किया जाने वाला क्रियाशीलता का गमक, यह चैतन्य जिस प्रकार से आपने प्रस्फुटित किया है, उसे पल्लवित होने की सारी धरातलों के ऊपर में आप जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करें. आप कर रहे हैं और करते रहने की ईश्वर आपको हिम्मत और हिमाकत दे. इसी प्रार्थना के साथ आपके इस बज़्म में उपस्थित होने का सद्भाग्य सौभाग्य आपने दिया. मेरे मित्र के इस पदारोहण के अंतर्गत उससे 1 साल सीनियर होने के नाते मैं कुछ अधिकार से यहाँ आया और उस अधिकार से उसे अनेक शुभेच्छाओं का आधार देते हुए
बिल्कुल, you shall make it, you are born to make it, and ultimately तेरे पास तो वो जादुई तिलिस्म है जिसका नाम मेलोडी है, जिसका प्रतीक मेरी सुरभि बैठी है, जिसका प्रतीक मेरा हमारा मित्र ढूंढने बैठा हुआ है. इट्स दैट मेलोडी ऑफ लाइफ. समाज के अंतर्गत अभाव तो केवल मेलोडी का है मेरे भाई. मेलोडी का तात्पर्य वह केवल संगीत से नहीं है, वह जो कर्णप्रिय हो, वह जो हृदय प्रिय हो, वह जो मर्म प्रिय हो, जो मर्म को जाकर के स्पर्श कर देती हो, उसी का नाम मेलोडी है. लिरिक्स के अंतर्गत जब भाव का स्वरूप आकर मिल जाता है और वो मन को छूने की ताकत रखता है, वो मन को केवल गुदगुदाने और सहलाने का काम नहीं करता, परंतु वो मन को चिरंतन रूप से एक ऐसे उच्चांक पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पर वो केवल आह्लादित नहीं होता, स्पंदित होने के लिए भी तैयार हो जाता है. उसी का नाम जीवन की मेलोडी है. इट इज दैट मेलोडी विच इज डिस्टॉर्टेड. इट इज दैट रिदम ऑफ collective and social life which has gone absolutely in disarray. It is that which is required to be brought in order, in which the small little efforts which are being undertaken by social service organizations like Rotary, मैं उस समाज की ओर से जो कदाचित अपने ऋणानुबंध का भाव व्यक्त करना चाहता है, मैं उस समाज का प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच केवल ऋण की अदायगी के तहत ऋणानुबंध को व्यक्त करने के लिए इन शाब्दिक स्वरूपों के अंतर्गत आप सभी को समर्पित करता हूं. और समर्पित करते हुए मैं आपका केवल नतमस्तक होकर उस समाज की ओर से अभिवादन करने के लिए आया. मेरा अभिवादन आप सब स्वीकार करें. इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाया. आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विराम देना चाहता हूं. Thank you so much, sir. Thank you for your erudite words. It was indeed a treat to listen to you. We would like to acknowledge presence of PDG Rotarian Shabir Shakir, Dr. Shriram Kane, Dr. R.B. Deshmukh, Dr. Devendra Mahure, Dr. Sushil Solanki, Raje Bhosle, Rotary Club Nagpur South East. We welcome you on behalf of RCNS. We would like to call upon Rotarian Virendra Patrikar, District Secretary Service Project. He wanted to address the club for a minute. Good evening, dignitaries on and off the dais. इन दो महानुभावों को सुनने के बाद मुझे क्या कहना है सर ये मैं भूल गया एक्चुअली. तो एक 5 सेकंड मला लागले थोडं मला गॅदर करायला. Friends, I am here on behalf of District Governor DG Ashaji to announce a series of projects she wished to undertake across the district from Nagpur to Nasik. She has envisaged a dozen projects, out of which probably I would list out 6 to 7 which we would like this club to take up. The first one is water aerators. Aerators are small devices, 100 rupee devices which fits into the faucets of taps, saving 2/3 of water that flows out. You buy thousands of that and probably will be saving crores and millions of liters across the district. Second is soil rejuvenation. All the details would be shared in a fortnight to all the clubs through the common bulletins. Third is bicycle projects. Friends, this is a project which is very close to our DG Ashaji's heart. She is donating 5,500 bicycles across the district, costing more than 2.22 crores, out of which she is sharing half the cost of it. So Nagpur region has got some 1100 bicycles in our kitty, and you can buy it at 4,000 and she'll donate another half of it to all the clubs. Second and third project is from Singer company. There are sewing machine class certificate and diploma courses, and Meri Rasoi culinary courses in that. Last is the bamboo plantation, which we want to undertake across the district in volumes, not in tens and hundreds, but we are negotiating for a very, very aggressive pricing, and it would be donated to all whomsoever wish to do plantations for bamboo will be there with your club.
And the most important project is RILM, that is Rotary India Literacy Mission, where Rotary India intend to educate lakhs of students with the latest e-learning courses worked out with Byju's. Byju's are giving, not Byju's, rather Rotary is giving a course, 3-year course, costing 80,000 rupees in only 1,000 rupee to Rotary clubs. And every school, we can donate only 25 such projects, students. We would be giving you all the details maybe in a week or so, and I look forward all your support, club support for these projects by the district governor. And yes, we would like to carry the wisdom of this club for service projects across the districts. So do share projects which you would want District Governor AG to take across the districts. Thank you so much. Thank you. Having heard the erudite words, now comes the time to express gratitude. To express gratitude and love on behalf of the club, may I now request our President, Rotarian Dr. Uday Gupte sir, to present Dr. Ved Prakash Mishra sir with a memento as a token of our love and gratitude. Thank you so much, sir, for being with us. I request President Rotarian Uday Gupte sir to present a memento as a token of our love and gratitude to our guest of honor, our very own PDG Dr. Satish Sure sir. I request Secretary Rotarian Deepak Sonawane to present a memento of our love and gratitude to AG Rotarian Ashok Chandak sir. Thank you, dear guests, for sparing your valuable time and being with us this evening. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It is a spark that lights a fire of joy in your soul. I request Team 22-23 to come on stage and present a memento of thanksgiving to IPP Rotarian Advocate Samir Sohoni for having led the team through the 51st year of the club. Gratitudes do not end here, Amit. The stage in Rotary is incomplete without the active role that is played behind the curtains by the ladies. I request Dr. Smita Gupte to present a souvenir to and Mrs. Yashodhara Soni for being a wonderful host for the year 22-23. Can we have Apurva Gupta here on the stage on behalf of Mrs. Smita Gupte, please? Sir can do the honors. Thank you so much. Thank you. Before moving ahead, I request IPP Rotarian Samir Sohoni sir to please accord a token to Manoj. And Mukunda. Can we have Manoj and Mukunda, please? We have 2 new members who have just arrived. Can I request Dr. Sopan Gupte and Dr. Apurva Gupte to come on stage to be inducted as new members. Dr. Ravi Nikhade and Dr. Anupama Nikhade, can we have them on stage, please?
I now call upon Club Secretary Deepak Sonawne to make club announcements and propose the vote of thanks. I hereby request President Dr. Gupte sir to felicitate our MOC Mrs. Mrunmayee and Mr. Amit. A warm welcome and greetings to ladies and gentlemen, distinguished guests and dear Rotarians. I am Deepak Sonawne, Secretary Rotary 2023 and 24. Some club announcement. Birthday. Rotary Ann's Manju Joshi celebrated her birthday on 2nd July. Rotary Ann Dr. Gauri Vaidya celebrated her birthday on 6th of July. Upcoming birthdays. Rotary Ann Kavita Aher will be celebrated her birthday on 16th July. Anniversary. Myself Deepak Sonawne and Vaishali celebrated their anniversaries on 4th July. Rotary and Vandana and Nandkishore Khedikar celebrated their anniversary on 6th of July. Upcoming anniversaries. Purushottam and Vinita Gaidhane will be celebrating their anniversary on 24th of July. Club activities, Friday meetings. Talk on Abhyudaya Global Village on 14th of July. Closed and meetings on 21st of July. Presentation on Know Our Members on 28th of July. This is the club announcements, club activities for July month. On behalf of entire organizations committee, I stand here today to express our heartfelt gratitude and extend warm vote of thanks to all of you who have made this Rotary installations program a remarkable success. First and foremost of our deepest appreciations goes to Rotary International for their continuous support and guidance. We would like to extend our sincere gratitude to our esteemed chief guest, Dr. Ved Prakash Mishra, for gracing these occasions with their presence and delivering inspiring address. Your insightful words have undoubtedly motivated us all to strive for excellence and make a positive difference in the lives of people. Special thanks to PDG Satish Goye sir and Assistant Governor Ashok Kandak sir. A special note of thanks to our outgoing Rotary President Advocate Samir Sohani for their unwillingly dedications and outstanding leaderships during their terms. We are grateful for your services and commitments. We would also like to welcome our incoming Rotary President Dr. Gupte, who has taken up the responsibility to lead our club to new heights. We have complete faith in your ability and are confident that you will steer our club towards even greater accomplishment in the coming years. Our heartfelt appreciation goes to all BOD members of our Rotary Club of Nagpur South, both outgoing and incomings, for their tireless efforts and commitments, enthusiasm in carrying out various projects and initiatives. We are immensely grateful to all our aunts whose generous contributions have made this program possible. We sincerely appreciate your commitment to our cause. A special mention goes to the past President Milind Pathak for institutions of engineers and Yash engineering staff, past President Amit Gokhale for Sempakghar for Swadishta Bhojan, and RCNS members and volunteers Manoj and Mukunda to have worked tirelessly behind the scene to ensure the smooth executions of this event. Thank you for your unwaveringly supports. Last but not least, we would like to express our gratitude to all guests present here today. Your presence has added immense value to these occasions, and your continued support, encouragement motivate us to strive for the excellence in all our endeavors. Once again, we extend our heartfelt thanks to everyone who has contributed to the success of the Rotary installations program.
Together, we can make the real difference and create a brighter futures for all. Thank you. Have a wonderful evenings. Thank you. Thank you so much. The end is always sweet. To make it a little more sweeter, I'd like to call upon Rotarian Prasanna and Mrunal Dani to accord a token of their love and affection to IPP Rotarian Samir Sohoni and Yashodhara Sohoni. Thank you so much, one and all, for being a wonderful audience.